Hey guys, best wishes to all our NEBOSH aspirants who have written the recent exams, the OB exams. So the response from most of our companions were really good. They were really happy with the questions. They said like most of the questions were a bit easy, but the real confusing part was the word counts. Like most of you are not aware of how much to write, and like they know how to write, but they don't know how much to write as the word count for the exam. So we thought of making a video. We will be seeing how many word counts we have to fill up for the exam. So everyone knows about the total word counts and all, but no one knows properly about how many words we need to write against each marks, right? There is a proper format for that. So we will be discussing this in today's video. है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि निबोश के जो एग्ज़ाम में जो वर्ड काउंट्स है वो कितना हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो एक्चुअली सब लोगों को पता है कि टोटल वर्ड काउंट्स कितना है, लेकिन रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए थे, एग्ज़ाम पेपर जो था बहुत ही सिंपल था। जो मुझे रिव्यू मिला उस हिसाब से बहुत ही सिंपल पेपर था। इट वाज रिलेटेड टू पेंडेमिक, तो ज़्यादा बहुत से पॉइंट्स आप लोग इमेजिन करके भी लिख सकते थे। तो लेकिन लोगों का कन्फ्यूजन जो है वो यही है कि कितने वर्ड्स सर हम लोगों को लिखना पड़ेगा, कितने वर्ड्स, मैंने मिनिमम इतने वर्ड्स लिखे तो क्या मैं पास हो सकता है, ऐसे बहुत से डाउट्स है। तो मुझे लगा कि शायद एक सेपरेट वीडियो बना लेते जिसमें हम लोग वर्ड काउंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और कितने क्वेश्चंस को कितने वर्ड्स के हिसाब से लिखने का है, तो उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये देखने वाले कि आपको कितना लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में, ताकि आप लोग उस वर्ड काउंट को कंप्लीट कर सके, कवर कर सके। So friends, first of all we have to understand the total word counts which is allowed for the exam is 3000 words in the NEBOSH. So there is a range, like there is a minimum words and there is a maximum words, which is we call it as a buffer. So NEBOSH has set a buffer for this word count. So first we will see the highest one. So in total 3000 words you can write maximum of 3300 or maximum of 3400. So the concept is this 300 or 400 words, they are given as the buffer by the NEBOSH. So if you write the total words of your total word counts of your answer of more than 3300 or 3400, then in that case it won't be counted by the NEBOSH. The NEBOSH is not gonna check your word counts if it is more than of 3300 or 3400. Now the next question will be, so what if you write less than the minimum word counts? So the minimum word count which is given by the NEBOSH is 2700. So if you write less than 2700, the NEBOSH will be checking it, but it will be deducting the answers because the word count is less. So it is less than 2700 means there will be deduction in some parts. So you are not going to get full mark even if you have written the quality answers, but if your word count is not there, you are not going to get full marks for that. So guys, now you understand why NEBOSH is giving so much time for the OB. This is the reason. They want you to write the quality answers and to cover the word counts. तो दोस्तों यहाँ पे NEBOSH में जो टोटल वर्ड काउंट है वो है 3000 वर्ड्स। अब देखिए 3000 वर्ड्स NEBOSH ने स्टैंडर्डाइज करके रखा हुआ है, इसमें आगे पीछे भी हो सकता है, तो उसे हम लोग बफर कहते हैं। अब 3000 में अगर आप 3300 और अप टू 3400 भी लिखोगे तो आपको कंसीडर किया जाएगा, लेकिन अगर आप 3400 के ऊपर या 3300 के ऊपर इन सम केस अगर आप वर्ड काउंट्स डालते हो तो वो जो एक्स्ट्रा जो वर्ड्स है वो काउंट नहीं किया जाएगा, NEBOSH उसको काउंट नहीं करेगा, तो आपको उसके लिए मार्क नहीं मिलेगा। वो आपको पहले समझना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो मिनिमम वर्ड काउंट है वो सेट किया हुआ है 2700। तो इट मीन्स अगर 2700 के नीचे अगर आप लिखोगे तो आपका जो है वो डिडक्शन में जाएगा, मार्क डिडक्शन होगा। तो अगला सवाल है कि मार्क डिडक्शन कैसे होगा सर? तो मार्क डिडक्शन कैसे होगा कि अगर आपने 2700 वर्ड्स के नीचे लिखा हुआ है तो आप कितने भी क्वालिटी आंसर्स दो तो आपको फुल मार्क नहीं मिलेंगे। सिंस आपकी जो वर्ड काउंट है वो लेस देन 2700 है, तो उस केस में आपके जो मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये इन लोगों ने इसलिए सेट किया हुआ है, इसलिए ओबी के एग्ज़ाम में जो है दोस्तों आपको इतना टाइम मिलता है ताकि आप अच्छे हाई क्वालिटी पॉइंट्स लिख सको एग्ज़ाम के लिए, और उसी टाइम पे पैरेलली आप वर्ड काउंट्स को भी कंप्लीट कर सको। Hey guys, so here is the final word format which I have prepared for you, against which you can write in the exams. Like if you are facing 10 mark questions in the exam, then you can write
300 words. You 10 or 10 plus and 10 minus buffer is okay, like you can write 290 or 310, so there is no problem, but it is always suggestible to write 300 words against 10 marks. Similarly, if you are facing 50 mark questions, then you can write 450, and there is again a buffer of 440 or 460 for you. For 20 marks it will be 600 words, and for 5 marks it will be 150 words, which you can write for the exam. तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक वर्ड फॉर्मेट दिया हुआ, टेबल दिया हुआ है, जिसके बेस पे आप लोग वर्ड्स को लिख सकते हो एग्जाम पे. तो अगर आप एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन को फेस करते हो तो आपको 300 वर्ड्स, मिनिमम 300 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे. उसमें 290 10 प्लस और माइनस एक्सेप्टेबल है, तो उसमें 290 या 310 भी हो जाता है तो मुश्किल नहीं है. उसी तरीके से 15 मार्क के क्वेश्चंस में मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग 450 वर्ड्स को लिखो. उसमें अगेन आप लोग बफर रख सकते हो 440 का या 460 का. उसी तरीके से अगर 20 मार्क का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप 600 वर्ड्स रखिए, और 5 मार्क्स का अगर आता है तो आप उसमें 150 वर्ड्स रखिए, और विथ बफर 10 प्लस और माइनस. So guys, I hope this short video is useful for you for preparing your next NEBOSH exams. So stay in touch for the further videos.